all are doing well and preparing well for your CUET examinations. So exam ahi ase, so it is the right time to do what? It is the right time to do revisions. So today again we are going to revise. This is from the unit 1 part A. Okay, so today we are going to discuss part A, that is not for profit organizations, some topics which is important for exam point of view. Okay, it is a theoretical part, and from theory the questions are coming now. So jibla questions ahi ase ami ki korim aji revise korim from a theoretical basis. Okay, so let's start. So not for profit organization or joar agote, first we have to know that organizations divided into two categories for carrying the economic activity. For carrying the economic activity, the organization are dividing in what, in which sectors? That is a trading and non-trading. Okay, so what is trading and what is non-trading? The trading organizations deals with the different types of goods which are sold to the consumer, government or business purpose. যিবিলাক বস্তু কি কৰে, সোল কৰে, বেচে কনজিউমাৰক, গভৰ্ণমেণ্টক আৰু বিজনেছ পাৰ্পছৰ কাৰণে যিবিলাক বস্তু বেচা যায়, যিবিলাক তোমালোকে কি হয় ট্ৰেডিং কি কয়, য'ত মানে মানি ইনভলভ আছে, দ্য ট্ৰানজেকশ্যনছ আৰ ইনভলভ ইন দেয়াৰ, দিছ ইজ কল্ড আ ট্ৰেডিং. অ'কে, ইফ ইউ নিড ছামথিং ইউ হেভ টু, যিটো হয়, যিটো ট্ৰানজেকশ্যনছ কৰি তুমি বস্তুটো পালা, সেইটো কি হয় ট্ৰেডিঙত থ্ৰৰে আহে. ত' কি হয় কনজিউমাৰ তুমি আহিছে ক'লা, as a normal human being you are trading, that is you are coming in a consumer. If the government purchasing something for their different activities for the departments, for different departments, then this is called again trading. Okay, so business purpose also is going to same law. Okay, so trading organization basically the organizations which are deal with the goods and services which is sold to the consumer, business and government. Okay, now the time to non-trading. What is non-trading? It is not based on to earn profit, but to provide valuable services to its member and society. So non-trading is not to sell the goods. They are based on services. Okay, they are providing services to the members and society. So this is called a non-trading. Okay, so till now what we are learning, that organizations for carrying the economic activity divided into two types. One is a trading and one is a non-trading. So trading organizations are those organizations in where the goods are sold directly to the consumer, government and business, and non-trading in where the goods are not sold. In here the dealing with the services which is provided by members and society. Okay, hope you understand till now. So next is non-trading divided into two categories. So non-trading again divided into two categories. One is a profit-seeking organization and another is a not-for-profit seeking organizations. So as the name suggests, the profit-seeking organizations are those organizations in where the profit is a main motive to providing the services to you. Okay, the not-for-profit seeking organizations are based on the, as the name suggests, they are not based on the profit earning. Their mainly motive is to provide service to society for the welfare of the people. So that is called a not-for-profit seeking organizations. Okay, so our topic is what? Not-for-profit seeking organizations. Okay, it is a part of non-trading. So non-trading is basically dealing with the services, not dealing with the goods. Okay, hope you understand till now. Okay, the features of NPO. NPO means not-for-profit seeking organization. In short, it's called NPO. Okay, so entity. So features kya hai? The features is entity. NPO, not-for-profit seeking organization, is a separate legal entity. They are legal entity. Matlab, they are created by law. Okay, so it is promoted individually or individual or enterprise, but cannot be owned or controlled by them. They can be promoted individually or in a group, but they cannot be treated by themselves. Matlab, what is meaning in here? The meaning in here does not owned or controlled by them. They can't be controlled the NPO. NPO have their legal entity. उन लोग का अलग वजूद होता है. Okay, so they are owned and controlled by themselves. They are owned and controlled by the law. So the members cannot be controlled them. The laws, according to the rules and regulations etc. by the law, they are functioning. Okay, in simple. Objective. NPOs are established with the social objective of rendering services to its member. Objective, the NPO's objective is in here that they are not based on the profit seeking. Their main objective is to
rendering services, to providing services to those who are needy. For example, in the sense the old age home is what? They are providing what? Services. But old age home, the different kind of activities are going for animal welfare. All of our what? All of our providing the services. For example, the animal welfare. एनिमल के लिए जो मतलब स्टैब्लिश होता है शेल्टर्स एंड ऑल, दे आर व्हाट? एनजीओ. एनिमल का एनजीओ होता है. द एनजीओ में क्या होता है? दे आर नॉट, द एनिमल्स आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू द मनी ना, दे आर नॉट एबल टू गिव यू मनी फॉर सेविंग देम. So it just give you a hint now that is the not-for-profit organizations are basically those which are not based on profit. They are doing the activity to running the humanity. So humanity के purpose में वो चीज़ें होता है. For example, in the world perspective, we can say the UNICEF. UNICEF is what? They are basically providing the services, but for this they are not charging anything. Their main motive to delivering the services and attain the goal which is not based on the profit, which is based on the humanity perspective. Okay, so basically that's why the NPOs are running. Okay, the sources of fund. NPO's income is generated from subscriptions and contributions made by the members to operate the project of NPO. If there is an NPO, is a not-for-profit organizations, but then also they need money. For what? They need money to survive, because without money the functions cannot be happened. For that reasons they need money. So from where they get the money? They getting the money from the different kind of membership fees which is are taken from the members. Okay, and the subscription fees. For example, if you say subscription is a what? For example, if you avail the services, if you want to avail services from Netflix or Amazon, you have to subscribe some amount now for getting the benefits from there. Like that, the subscriptions work. In here also, if you want to give something to the NPO, you have to subscribe some amount. This amount is called subscriptions, and the contributions made by the member to operate a project. For some project, this is very beneficial, and the members wanted to contribute, but if the not members, the peoples wanted to contribute in that project, which is come under the NGOs. So in this project, some peoples are giving the money so that they can what? They can do, they can also help like that by giving the money. From that way also, the NPO receive funds. Hope you understand. So what I'm saying till now, the sources of fund क्या होता है? The sources of fund वो चीज होता है that is generated from the subscriptions and contributions made by the members to operate the project of NPO. Okay, management. NPOs are organized and managed by an elected body of members. So who are the managers of NPO? It is not like that कि कोई भी आके NPO को manage कर रहा है. NPO को ऐसा manage नहीं किया जाता है. NPOs are what? Managed by elected members. Some members are come together and they elect one person in between themselves, among themselves, which is calling the managers, who manage each and everything in a NPO. Okay. So necessity of maintaining accounts in NPO. Even though the NPOs are not-for-profit seeking organizations, they need money to survive, to functioning day-to-day activities which they have to perform. So in that, why the accounts are maintained in there? So why the accounts maintained in the NPOs also? Because their main motive is not to earn profit. Then also they have to maintain accounts, because the NPOs are earning money. They are earning money in the sense of to function in their activities. So for maintaining the fund, because as a human tendency, because we are saying that the NPOs are separate legal entity. Their NPOs and the members and individuals who have created the NPO are separate, and they are separate. But then also, directly or indirectly, the NPOs are running by whom? The members. Members are what? Human being. So human being का एक tendency क्या होता है? We are not able to remember each and everything in a detailed mode.
So that's why the accounts have to be maintained, so that a decorum are maintained, that even though that, because the in some NPOs and some NGO, NPOs का example होता है NGO, so some big NGOs are receiving lots of money na. So how to invest in the another project, how to they are able to develop, how to they are functioning. So कुछ चीजें रह जाता, डोनेशंस में कितना रिसीव किया, they are not able to remember. So that's why the accounts have to be maintained. और कभी कभी क्या होता है, even though they are NPOs, they are not want to running in a loss, जहाँ पे इनकम कम हो रहा है, दे आर बेसिकली सर्वाइविंग ऑन इनकम, जो तो रेवेन्यू आ रहा है, जो तो इनकम वो लोग अर्न कर रहा है, उसी से उन लोग को खर्चा करके चलना है. समटाइम्स क्या होता है, जो इनकम जो अर्निंग वो लोग कर रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू, जो अर्निंग वो लोग कर रहे हैं वो क्या होता है, उससे ज्यादा खर्चा ना हो, वो कैसे पता चलेगा, जो वो लोग खर्चा कर रहे हैं ज्यादा और इनकम हो रहा है उतना नहीं, तो लोग सर्वाइव कैसे करेंगे. एक लॉन्ग रन में एक एनजीओ को भी सर्वाइव करने के लिए पैसा की जरूरत होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो वो लोग अर्न करे उससे ज्यादा वो लोग खर्चा करे. सो पता कैसे चलेगा कि खर्चा ज्यादा हो रहा है या इनकम ज्यादा हो रहा है, एक पता चलेगा अर्निंग ज्यादा हो रहा है क्या हो, तो वो पता चलेगा द एनालिसिस अकाउंट्स मेंटेन करके. सो दे गेट फंड फ्रॉम डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज डोनेशन, सब्सक्रिप्शंस एंड समटाइम्स दे रिसीव ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट समटाइम्स क्या करता है, ग्रांट देता है. ग्रांट मीन्स helping amount, something the government provided the NGOs. Okay, so that funds are maintained and in an organization's way, in an organized way. एक organized way में maintain करने के लिए NPOs have to be maintained. Okay, hope you understand till now what I am saying. Okay, so NPO maintaining 2 books of accounts for the purpose of recording daily transactions. Daily transactions record करने के लिए NPOs generally maintain 2 books of account. There is a cash book and one is a ledger. Okay, the cash book and ledger we are ये हम लोग 11 के क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किसको क्या बोलते हैं. ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी हम लोगों ने क्या किया कि क्या डेली ट्रांजेक्शन्स के लिए क्या रिकॉर्ड किया जाता है. इन हियर वी हैव टू सी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर. क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है NPO थ्रू. The first is a receipts and payment account, second is the income and expenditure account, and third is the balance sheet. Okay, first the receipt and income, receipts and payment account. Receipts and payment account क्या होता है? So receipts and payment account is it is a summary of cash transactions. Remember one thing, the receipts and payment account only record the cash basis amount. Because of why? Because it is a real account. So real account, because of its real nature, they have to maintain the cash transactions. What is cash transactions? Cash transactions are those transactions which are happening. Okay, this is not that अभी रिसीव किया 10,000 डोनेशंस, तो ये रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में आ जाएगा. अगर ये होगा कि इन फ्यूचर हम लोग 10,000 एज अ डोनेशन रिसीव करेंगे, इन फ्यूचर का बात है, तो यहाँ पे वो नहीं आएगा. हालांकि ये बात सच है कि वो देने ही वाला है, देन ऑल्सो यहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ओनली रिकॉर्ड द कैश ट्रांजेक्शंस, बिकॉज इट्स अ समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस. जो कैश में है, तुमने रिसीव किया है, अभी हो चुका है वो काम, दे आर गोइंग टू डेफिनेटली गोइंग टू बी रिकॉर्ड इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. ओके, इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड मतलब जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने वाला है, देन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयरिंग. ओके, प्रिपेयर्ड. It is recorded from the cash book where the transactions are recorded in a chronological order. So as we are saying, यहाँ पे cash book है. The cash book is what? They are recording the daily transactions. है कि नहीं? तो cash book में daily transactions record हो रहा है. So cash book से daily transactions जो record हो रहा है, उसको क्या करते हैं, वहां से यहाँ पे उठा के डालते हैं, जो एक डबल वेरिफिकेशन का काम भी करेगा. How they are going to be do a double verifications, because अगर कैश बुक में कोई भी गलती हुआ तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट करेगा. सो वी आर एबल टू नो दैट 2 times वेरिफिकेशंस वहां पे हो गया. ओके, तो इट इज रिकॉर्डेड फ्रॉम अ कैश बुक वेयर द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. कैश बुक में जो भी रिकॉर्ड किया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाएगा. क्रोनोलॉजिकल मीन्स व्हाट? ऑर्डरली. ओके, टाइमली मैनर, कि एक के बाद 1 तारीख को ये, तो 2 तारीख को ये. सो इट इज कॉल्ड व्हाट? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ओके, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट.
नो डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो कैपिटल नेचर का है वो भी रिकॉर्ड होगा, जो रेवेन्यू नेचर का है वो भी रिकॉर्ड होगा। मतलब क्या है इसका? तो मतलब ये है कि डोनेशंस क्या है? दिस इज अ वन टाइम इन्वेस्ट, वन टाइम समवन गिविंग टू योर डोनेशंस। वो बार बार सेम ही इंसान डोनेशंस नहीं भी दे सकता है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड वन टाइम डोनेशन, जो वन टाइम ही रिसीव करेगा। सो इट इज ऑल्सो कैपिटल नेचर बिकॉज जो इसका अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है। सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अ कैपिटल नेचर। तो कैपिटल में भी वो है, फिर भी वो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में आएगा। और कुछ होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, जैसे कि मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, फीस, जो चीजें होता है दे आर हैव टू पे मंथली बेसिस। So that's why it's a revenue recurring nature because they have to pay again to the organization. One time payment नहीं है, बार बार पे करना पड़ रहा है। So this is what? This is giving you a hint that is a revenue nature. जो रेवेन्यू नेचर है वो भी आएगा, जो कैपिटल नेचर है वो भी आएगा। सो नो डिस्टिंक्शंस, कोई भी डिस्टिंक्शंस, कोई डिफरेंसेस नहीं होता है, दोनों इक्वल होता है रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट के लिए। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। ओके, any amount receivable or payable in the future are not taken into the account while preparing this account. That means what? That means that any account जो hint दे रहा है कि वो receivable है, कि in future receive करेगा, and वो payable है, in future you have to pay, then also it's not come. Because of why? Because I am saying earlier that it is a cash basis. They are dealing with the cash basis. Because जो cash book होता है वो क्या होता है? This वहां से उठा के यहाँ पर डालते हैं। सो कैश में तो बेसिकली कैश का आइटम ही होता है। सो दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू बी इग्नोर। जो रिसीवेबल है, जो अक्यूट है, प्रीपेड है, so these all are going to be ignored in the reception payment account because they are not taking this amount in the recipient payment account because they are specifically meant for cash basis. Okay, hope you understand. Because whenever you see that reception payment account, you also have to see yourself that एक एनजीओ में इसका जरूरत क्या है। बिकॉज जब भी अकाउंट्स खोलना है उनको कैश का क्या क्या डील हुआ है, जो कैश हम लोग के पास अभी है वो जानना है हम लोगों को। जो मिलेगा पाएगा वो सब नहीं जानना है। अभी हम लोग को कितना कैश है वो जानना है। तो वो कुछ अकाउंट होना पड़ेगा ना कि जो जिसको खोल के फटाक से आंसर मिल जाए, वो रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट देगा। ओके और कैश बुक में क्या होता है कि दे आर रिकॉर्डिंग द लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। डेली का जो भी है कैश का ट्रांजेक्शन वो सब रिकॉर्ड करेगा। सो इन द एंड ऑफ द डे हम लोग को एक समरी चाहिए, जो हम लोग को एक डिटेल में बता सकता है कि हाँ अभी हम लोग के पास इतना कैश है, इतना हम लोग को देना है। तो दे आर गिविंग द परफेक्ट फिगर कि मिलने वाला है, पाने वाला है, देने वाला है। उसको हम लोग को वो एग्जाम्पशंस हो गया। एग्जाम्पशंस को छोड़ के जो रियलिटी है उसका पिक्चर दिखाता है रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। It is an asset account, as I'm saying, it is an asset account. That means a real account. Okay. It does not constitute double entry system. यहाँ पे डबल एंट्री नहीं होता है। डबल एंट्री में डेबिट क्रेडिट जो होता है ना वो इसमें नहीं होता है। It signifies the correctness of the cash book. I am already saying that इस वेरीफाई करता है कैश बुक को कि ये करेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, अगर करेक्ट कर रहा है then it will be not reflected in the, it will be correct कर रहा है तो it will be reflected in the reception payment account। नहीं कर रहा है तो it definitely going to be reflected in the reception payment account। so क्या होता है, करेक्टनेस को दिखाता है। reception payments are covering any periods मतलब अगर रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट हम लोग बना रहे 2011 का, ओके 2011 का हम लोग रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बना रहे, तो 2010 का अमाउंट है जो 2011 में रिसीव किया गया है। तो है अमाउंट 2010 का पर रिसीव किया है 2011 में, देन ऑल्सो ये यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। वो इस चीज को बता रहा है कि अभी का कौन सा साल चल रहा है, 2023। तो 2023 का अकाउंट है, बट 2022 में कुछ अमाउंट मिलने वाला था, बट वो मिला कहाँ, कब, 2023 में मिला। तो 2023 में वो अमाउंट क्या होगा, लिखा जाएगा, रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में लिखा जाएगा। क्योंकि व्हाई, बिकॉज लॉ के अनुसार कवरिंग एनी पीरियड कैश होना चाहिए। कैश में वो भी मिल गया ना, वो 2022 में जो रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट हुआ होगा उसमें वो अमाउंट रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। क्यों, बिकॉज उस टाइम में मिला नहीं था, मिलने वाला था। तो इसके कारण इस ईयर में उसको मिल गया। सो इसके कारण वो उसका एंट्री यहाँ पे आ गया, बिकॉज
वो पिछली बार नहीं आया था, पिछली बार में रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में इसको इग्नोर कर दिया गया था, बिकॉज दे आर बिलीविंग इन दैट रियलिटी कि मिलने वाला है पाने वाला है, उसमें नहीं वो लोग घुसते हैं. ओके ओके ओके, टिल नाउ इफ यू हैव डाउट देन जस्ट कमेंट मी. ओके, income and expenditure account. What is income and expenditure account? It is prepared to see whether the revenue of a particular period are sufficient to cover the expenses of that period. As I am saying that ना कि income जितना हो रहा है उतना खर्चा हो रहा है कि नहीं, उससे ज़्यादा खर्चा हो गया कि नहीं, हो गया क्या. This is giving you the perfect pictures when you prepare income and expenditure account. Whenever you prepare an income and expenditure account, this giving a hint that the sufficient amount are available or not to covering the expenses. Okay, in simple as this is. The sufficient amount है कि नहीं to see that they are able to covering their expenses. Okay, from where they are able to know, from the income and expenditure account. If the revenue is more than expenses, then the difference is called surplus. If this less, then it's called deficit. If the income, if the revenue, जो revenue है, when revenue is more than expenses, then it is called surplus balance. Okay, मतलब अगर रेवेन्यू 100 का मिला तो एक्सपेंसेस हुआ 90 का, जो 10 रुपए है और भंडार में फराल में हम लोगों का जहाँ पे भी होना चाहिए उसको, वो वहाँ पे अभी 10 रुपया जो यह उन लोगों का बॉक्स है जहाँ पे वो लोग पैसा रखते हैं, बैंक अकाउंट है. ओके, इस बैंक अकाउंट ऑफ एनपीओ, वहाँ पे अभी 10 रुपया है. ओके, 10 रुपये उन लोग के अकाउंट पे अभी है. सो दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड सरप्लस बैलेंस. ओके, अगर उल्टा हुआ, अगर रेवेन्यू कम है एक्सपेंसेस से, देन इट इज कॉल्ड अ डेफिसिट बैलेंस. ओके, व्हाई? बिकॉज अभी तुम्हारे पास रेवेन्यू है 90 का और एक्सपेंसेस है 100 का. ओके, अभी तुम्हारा बैंक अकाउंट में 10 रुपये तो नहीं है एक्स्ट्रा, वो तो है ही, और एक्स्ट्रा से तुम्हें 10 रुपये यहाँ पे कम पड़ रहा है. मतलब बैंक में तो पैसा जितना था उतना तो गया ही, और एक्स्ट्रा 10 रुपये का तुम्हें धार भी है, डेफिसिट बैलेंस भी दिखा रहा है. मतलब क्या है यहाँ पे, यू हैव मोर, you are doing more expenses than you are earning revenue. Okay, so it is able to known from the income and expenditure account. यहाँ पे एक चीज भी दिखाता है कि योर आमदनी 18 खर्चा 1 रुपया, फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग इन डेफिसिट बैलेंस. ओके, होप यू अंडरस्टैंड टिल नाउ व्हाट आई एम सेइंग. दिस इज आवर कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस कि अगर रेवेन्यू ज्यादा है तो क्या दिखाता है एंड कम है तो क्या दिखाता है, सरप्लस एंड डेफिसिट बैलेंस किस अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है. दिस ऑल आर कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस. ओके, surplus deficit transfer to capital fund of organizations. If the surplus is happening or deficit balance is happening, all are recorded in where the capital fund of the organizations. Okay, expenses are recorded on the debit side and income are recorded on the credit side. For example, it is your income and expenditure account. Okay, this is your income and expenditure account. In here, the expenses are recorded in the debit side, the debit, and this is credit. Okay, all the expenses come in a, all the expenses come on debit side and all the incomes come on the credit side. Okay, this is saying in here. Okay, ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, जितना भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट में आएगा और जितना भी इनकम है वो क्रेडिट में आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है. ओके, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट ऑल द लॉसेस and credit all the income and gains. Okay, so this is why this is called a nominal account. Okay, and reception payment account क्या था? reception payment account था रियल.
Real, debit the receiver, credit the giver. Okay. The golden rules of accounting. Okay. Expense or okay. It is prepared on the accrual basis. Receivable or not, paid or not, recorded into the accounts. मतलब it is prepared on the accrual basis. Accrual basis मतलब अभी अगर 2011 का पैसा हम लोगों को मिलने वाला है 2012 में, ओके अभी पैसा है ये 2011 का, मिलने वाला 2012 में, बट हम लोग प्रिपेयर करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अभी 2011 में, ओके बट मिला नहीं है वो पैसा, मिलने वाला है 2012 में। इन रिसीवेबल पेमेंट होता तो क्या होता, वो इग्नोर होता, बट कहीं तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, और रिकॉर्ड कहाँ पे करेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्यों? बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो सब अमाउंट होता है जो पे हुआ है या नहीं, आएगा या नहीं, मिलने वाला है या नहीं, पे करना है कि नहीं, इन फ्यूचर करना है, ऑल आर कमिंग इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिकॉज दे आर डीलिंग विद दैट। अगर 3 अकाउंट हम लोग बना रहे हैं तो कुछ तो लॉजिक होगा ना, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में छान दिया कि हाँ इतना अमाउंट यहाँ पे आएगा कि कैश में है, बट बाकी क्या क्या, बाकी का कहीं तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो एक्यूएट है, प्रीपेड है, वो कहीं तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दे आर कमिंग ऑन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। So it is prepared on the accrual basis. So that's why it is called, it is prepared in where? It is prepared in the how? It's prepared in the accrual basis. Okay. So accrual basis में also amount होता है जो receivable or not, paid or not, they are going to record in the income and expenditure account. जो receivable payment account में record नहीं होता है. Okay. Surplus and deficit are not distributed among the members. One of the thing, अगर सरप्लस हुआ, अगर मैंने बोला कि 10 रुपए बैंक के अकाउंट में है, सरप्लस में है, मतलब बैंक के अकाउंट में है, तो कहाँ जाएगा? मेंबर्स के साथ वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, बिकॉज ऑफ व्हाई, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मेंबर्स, नॉट द पार्टनर्स। हाँ, सो दैट्स व्हाई क्या होता है, जो भी सरप्लस है, जो भी डेफिसिट है, जो भी बैलेंस है, दे आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स, बिकॉज ऑफ व्हाई, बिकॉज दिस इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट सेविंग ऑर्गेनाइजेशंस and they are calling the members, they are not the partners। जो भी पैसा है, जो भी एनजीओ के थ्रू, एनजीओ में पैसा आएगा, they are the members are giving you to do some activity for social purpose के कारण दिया गया है, तुम्हें पर्सनल अकाउंट में भरने के लिए नहीं दिया गया है। जो भी सरप्लस होगा, जो भी चीज होगा, they have to be paid back to society। सोसाइटी के जो पर्पस के लिए पैसा मिला है वो अगेन उसी काम में यूज करना पड़ेगा। द मेंबर्स हैव द नो राइट्स टू शेयर इन बिटवीन देमसेल्फ। जैसे कि वो मैं बोल रही हूँ कि सरप्लस में ये हुआ है, तो डेफिसिट में भी सेम ही प्रोसेस है। अगर खर्चा ज्यादा है इनकम से, देन ऑल्सो जो भी डिफरेंस है वो भी मेंबर्स को पे नहीं करना पड़ता है, बिकॉज अगेन दे आर नॉट द पार्टनर्स, दे आर ऑल्सो आर मेंबर्स। ओके, सो दैट्स व्हाई क्या होता है, जो सरप्लस है, जो डेफिसिट है, दे आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द मेंबर्स। ओके, होप यू अंडरस्टैंड टिल नाउ। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल इनकम आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस अकाउंट। जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो भी कैपिटल इनकम है, कैपिटल इनकम और एक्सपेंडिचर मतलब वन टाइम पेमेंट, बार बार नहीं करना पड़ रहा है, वन टाइम रिसीव, बार बार नहीं रिसीव करेगा वो चीज। जैसे कि डोनेशंस, वन टाइम तुमने रिसीव किया है, वो बार बार तो रिसीव नहीं करने वाला है, तो वो सब चीजें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। ओके, बिकॉज दे आर नॉट रिकरिंग इन नेचर, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रिकरिंग इन नेचर अमाउंट्स आर गोइंग टू बी कम। ओके, द अकाउंट डज नॉट स्टार्ट विथ एनी opening balance but generally ends with the balance representing the either surplus or balance deficit। मतलब opening balance मतलब to balance BD, by balance BD जो होता है, this amount is not coming with that because opening balance से वो लोग नहीं open होता है वो लोग, but opening balance से start नहीं होता है, but ending में surplus है या deficit है उसमें close होता है। वो डिफाइन करेगा तुम लोगों को कि सरप्लस है या डिफिसिट है, वो उस एंडिंग लाइन आएगा, बट स्टार्टिंग लाइन नहीं है उन लोगों का। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। तो स्पेशल टर्म्स यूज इन द अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। एनपीओ में कुछ स्पेशल टर्म्स है, वो टर्म्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सो बी फोकस व्हेनेवर आई एम सेइंग समथिंग। कैपिटल फंड, NPOs do not use the word capital, they use the term general fund or accumulated fund। so NPO क्या करता है, कैपिटल यूज नहीं करता है वर्ड, बिकॉज ऑफ व्हाई, दे आर नॉट
profit seeking organizations ना, so that's why they are using the term general fund or accumulated fund. Okay, the excess of assets over the liabilities of NPOs term as a capital or general fund. Excess of assets over liability मतलब बैलेंस शीट में अभी एक बैलेंस शीट बना, लाइबिलिटी एसेट्स बैलेंस शीट, वहां पे एसेट ज्यादा है लाइबिलिटी से, तो बैलेंस शीट में क्या होता है, लाइबिलिटी एंड एसेट हैव टू बी सेम ना, हैव टू बी सेम। जब हम लोग इस बैलेंस शीट का बात नहीं कर रहे, जहां पे ये बात हो रहा है कि जहां पे एक्सेस ऑफ एसेट्स हो रहा है एंड लाइबिलिटीज कम है एसेट्स के तुलना में, तो इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड कैपिटल और जनरल फंड। बिकॉज कुछ कुछ बैलेंस शीट में ऐसा भी होता है जहां पे डिफाइन किया जाता है कि एसेट ज्यादा है लाइबिलिटीज के, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड कैपिटल और जनरल फंड। बट जो कैपिटल फंड है वो स्पेसिफिकली यूज नहीं किया जाता है ये वर्ड, क्योंकि ये एनपीओ है। सो एनपीओ में क्या होता है, जनरल फंड और एक्यूमुलेटेड फंड सबसे यूज होता है। ओके, members. So who is the members of NPO? NPOs are established by some persons and are generally registered under the Society Citizenship Act. This person determine how people can become a part of NPO. From the point of view of period of payment of members, the membership is divided into two category. तो ये क्या कहता है, मेंबर्स के कैसे तुम लोग एनपीओ का पार्ट बन सकता है वो डिफाइन करता है, और पेमेंट के हिसाब से भी मेंबर्स को डिवाइड किया जाता है टू कैटेगरी में। एक होता है लाइफ मेंबर्स और एक होता है एनुअल मेंबर्स। द लाइफ मेंबर्स आर दोस मेंबर्स हु आर एडमिटेड एज अ मेंबर्स फॉर द हिज लाइफ एंड पे लम सम अमाउंट एज द मेंबरशिप फी। इसने एक बार में ही पूरा फीस दे दिया, जितना साल वो रहना चाहता है एज अ मेंबर्स, पूरा साल का फीस वो दे दिया एक ही बार में, एक लम सम अमाउंट उसने दे दिया। So that's why it's called a life members. So annual members are those members which are not paying lump sum amount in the one time, they are paying in the annual basis. Okay, so that's why they are calling the annual members. So payment by members. Members क्या क्या payment करता है? Entrance fees. It is an entrance fees of members. It is need to pay only one time by the members. Entrance fees, entry fees होता है, एक ही बार देना है, बार बार नहीं देना है। Okay, so they are only one time. Okay, one time use होता है। Subscriptions. A members needs to pay a sum of money at a particular periodical interval every year in order to keep his membership. As I'm saying earlier, like a Netflix, Amazon, you have to pay on a monthly basis subscriptions. That is how it's work. So subscriptions क्या होता है, एक इंटरवल में every year you have to pay. So recurring nature ना, ये कहाँ पे जाएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा कि नहीं। बट योर आंसर इन हियर क्या होगा, आंसर अभी मैंने सिखाया है। ओके, आएगा कि नहीं, लेट थिंक। ओके, डोनेशंस, तो डोनेशंस क्या होता है, इट इज अ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड इन कैश। एक वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस है, वॉलंटरी मतलब कोई तुम्हें बोला नहीं, तो अपने अपनी इच्छा से दिया है उस पैसा को, तुम्हें बोला नहीं कि देना ही है, ऐसा नहीं है, तुम देना चाहता है इसलिए तुम दे रहा है इसको, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ वॉलंटरी। ओके, इट इज पेड बाय जनरल और स्पेसिफिक पर्पस। कभी कभी जनरल होता है, मतलब डोनेशन दे रहा है अपने हिसाब से यूज कर लेना, और कभी कभी होता है कि नहीं, ये पैसा दे रहा है इस काम के लिए इसको यूज करना, किसी और काम के लिए नहीं। जब जनरल होता है, इट इज नॉट केयरिंग लाइबिलिटी, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहा है एनपीओ को कि किसमें कैसे यूज करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहा है। बट जनरल बट स्पेसिफिक में और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो रहा है एनपीओ के लिए। क्यों? बिकॉज यहाँ पे तुम्हें पैसा तो मिल गया, बट साथ में तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया कि तुम्हें ये काम करना है। तो दैट्स वाई क्या होगा, ओके, जो स्पेसिफिक पर्पस होता है वो लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है, तो वो बैलेंस शीट में भी जाएगा। ओके, लीगेसी, it is a donations made by the will of a persons and received by an organization after the death of the persons. Legacy मतलब कुछ कुछ होते हैं जो अपना प्रॉपर्टी का एक हिस्सा पूरा का पूरा प्रॉपर्टी किसी एनजीओ के नाम कर देते हैं। एनजीओ मीन्स एनपीओ ना, किसी एनपीओ के नाम कर देते हैं, तो वो विल के अपने विल से वो कर रहे हैं। ओके, और जो करते हैं ऐसा, दैट इज कॉल्ड बाय द विल ऑफ अ पर्सन, अपनी विल से कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं। तो इसके लिए उसको इन फ्यूचर अगर उनका डेथ हो गया तो पूरा प्रॉपर्टी एनपीओ को चला जाएगा। सो इट इज कॉल्ड लीगेसी। तो एक एज अ लीगेसी भी तुम एक अर्निंग हो रहा है तुम्हारा। ओके, तो दिस इज लीगेसी क्या होता है,
क्या होता है, लीगेसी एक बार होता है, बार बार होता है, वो पैसा जो मिलेगा एक बार मिलेगा, बार बार नहीं मिलने वाला. सो इट्स कम इन वेयर, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा कि नहीं, लीगेसी. Honorarium. It is a kind of remunerations paid to a person who is not an employee of an organ NPO. Honorarium क्या होता है, एक kind of remuneration तुम पे कर रहा है, बट वो एम्प्लॉय भी नहीं है एनपीओ का. मतलब कभी कभी कोई फंक्शंस कंडक्ट कराता है एनपीओ, उस एनपीओ को फंक्शंस कंडक्ट कराने के लिए कोई गेस्ट आता है, कोई परफॉर्म करता है, तो उन लोगों को जो भी है एक पैसा देना पड़ता है, बिकॉज विदाउट मनी दे आर नॉट कम टू योर फंक्शंस एंड परफॉर्मिंग समथिंग, so you have to pay something na. This pay is called honorarium because they are not an employee, then also they come and they perform for you, so it's a responsibility for the NPO to pay them something which is called a remunerations. So it is a one time payment, they are not going to pay again and again and again. So वो क्या होता है, एज अ रेमुनरेशन तुम दे रहे हैं. सो ऑनरियम फीस जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा कि नहीं. अभी अकाउंट एंड ट्रीटमेंट आइटम्स रिलेटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या टर्म्स, क्या क्या ट्रीटमेंट होता है हर एक चीज का. सब्सक्रिप्शन को सब्सक्रिप्शन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. इट इज अ रिकरिंग इन नेचर, इट इज रेवेन्यूज रिसिप्ट एंड हैंस इट इज अ टेकन टू द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. जो सब्सक्रिप्शन है और रिकरिंग इन नेचर है और बार बार तुम्हें पे करना पड़ रहा है, तो ये क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा. बट कौन सा साइड में आएगा, in which side it's come, it can be asked in your questions. Okay, यह एक्रूअल भी है और क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. बिकॉज क्रेडिट साइड में क्या होता है, हर चीज, ये डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है. डेबिट साइड में ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में ऑल द इनकम. सो दैट्स व्हाई द सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इज come in where the credit side. Okay, एडमिशन फीस और एंट्रेंस फीस, दिस ऑल आर हम लोगों ने इसको पढ़ चुका है. सो जब भी रिसीव होगा, अगर बार बार हो रहा है, रिकरिंग नेचर में है, तो दिस इज गोइंग टू डेफिनेटली कम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ओके, सो जो चीजें रिकरिंग नेचर है, दिस ऑल आर कमिंग इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ओके, so remaining part we are discussing in the other sessions. Okay, so thank you for watching and very very best of luck for your examinations. Hope you understand what I am saying till now. So remaining parts we are continuing in the next class. Okay, so till then, best of luck for your examinations. Do well, practice well and prepare well for your upcoming examinations. I know you can crack your examination and getting a seat in your dream university. So very very best of luck.